Hi dear students. Let's see this question that came in JEE Advanced Paper-2 Physics in the year 2019. Again, one of the easy questions, multiple choice correct marking scheme. Was from the topic of modern optics. Many of the students could do this question very easily and they collected free marks for themselves. Let's see what's happening over here. A free hydrogen atom has absorbed a photon of wavelength lambda and it has jumped from the state 1 equals to 4. Immediately after, it releases a photon of wavelength lambda e and jumps to the state n equals to m. Okay, the change in the momentum of the hydrogen atom, due to the absorption and emission is delta Pa and delta Pe. So remember, this is the change in the momentum of the atom. The ratio of the wavelengths of the absorbed photon and the emitted photon is 1 is to 5 as per given as is the given in the question. We have to select some of the options, like we have to find the ratio of the kinetic energy of the electron in the state n equals to m to n equals to 1. We have to find the value of the state m. We have to find the ratio of the change in the momentum of atom when it absorbs the photon to the change in the momentum of the atom when it emits the photon. And we have to find the value of lambda e, that is the wavelength of the emitted photon, right? So basically, the question is easy, as I said. Let's do the calculations. Now, if you see the values, there are some values which have been given for us to for the help. 1242 electron hc का value 1242 electron volt nanometer and nanometer की value ये सब given है. Now if you see, when it absorbs a photon, जब वो absorb कर रहा है photon, so it is jumping from 1 to 4. Okay, so we know that hydrogen atom 1 से 4 jump करता है, that means E4 minus E1, this will be is equals to hc by lambda a, राइट? बिकॉज अगर उसने लैम्डा ए का फोटोन एब्जॉर्ब किया है तो उसके पास जो एनर्जी आई होगी एटम के पास, वो एच सी बाई लैम्डा ए आई होगी. दिस विल बी इक्वल्स टू ई फोर माइनस ई वन, विच इज नथिंग बट 13.6 इंटू 1 माइनस 1 बाई 16, राइट? सो दिस बिकम्स 13.6 into 15 upon 16. This is the value of hc by lambda I. Okay, now when it releases the photon, it goes to the state n equals to m. Okay, and we have been given that तो जो photon emit हो रहा है उसकी wavelength is lambda e. Okay, so we can say that E4 minus EM is equals to hc upon lambda e. Okay, and this will become 13.6 into 1 by m square minus 1 by 4 square, which is 16. So now if you take the ratio, अगर हम इसका ratio ले लें तो lambda a upon, so we will get lambda e upon lambda a, because ये denominator में है, so it will become उल्टा हो जाएगा ये, and this will become 13.6 will get cancelled. यहाँ पे 15 by 16 will be left out, है ना? और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 by m square minus 1 by 16, और ये वैल्यू हमें गिवन है 5. दिस इज 5, ठीक है, बिकॉज ये 1 by 5 गिवन था. सो यहाँ पे लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए आया है मेरा. सो 5 into 1 और ये 3 आ जाएगा. सो दिस वी विल गेट 3 by 16 will be equals to 1 by m square minus 1 by 16. So from here you get 1 by m square is equals to 1 by 4 by 16. So that means 1 by 4 हो जाएगा वो, correct? So m implies m becomes 2. That means it has jumped back to the second state. Okay, it has jumped back to the second state. So option B is correct. Option B is correct, and hence we can also find the ratio of the kinetic energy in this state n equals to m to n equals to 1, because E2 m is 2, so kinetic energy की वैल्यू कितनी होती है 13.6, है ना, बाई m स्क्वायर, तो m स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. और E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू होगी 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर. सो वी हैव टू फाइंड E1 बाई E2 और E2 बाई E1. हाँ, E2 बाई E1 मतलब EM बाई E1 चाहिए. सो ये काइनेटिक एनर्जी है, रिमेंबर दिस इज नॉट टोटल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. ओके, टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन आ जाता है और क्या, ठीक है. सो वी कैन से दैट KE2 बाई KE1 विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 4. ओके, सो ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए इज ऑल्सो राइट. नाउ डेल्टा पी ए, लैम्डा ई भी निकाल सकते हैं. लैम्डा ई की वैल्यू 418 नैनोमीटर्स, देखते हैं आती है कि नहीं. वी ऑलरेडी नो दैट ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है. तो यहाँ से लैम्डा ई निकल जाएगा, राइट. तो 13.6 इंटू
1/4 minus 1/16. Okay, so hc upon lambda e will be equals to 13.6, 1/4 minus 1/16, right? So this will be 13.6 into this will become how much? 4/16 minus 1/16, so this will be 3/16. ठीक है? So now if you use the formula 1242 upon this value 13.6, ठीक है, into 3 into 16 equals to lambda e. So lambda e is approximately तुम्हारा 487 nanometers के आसपास आ जाएगा if you do the calculations. So but the given option is 418, so this is not right. Okay, now we have to find the ratio of the change in momentum of the hydrogen atom when it absorbs the photon and when it emits the photon. Now this part you can think carefully. Let's say hydrogen atom is at rest, ये hydrogen atom है, ये rest पे है. अब now photon comes, ठीक है, photon comes with a certain momentum and photon के पास momentum कुछ p रहा होगा, ठीक है. So if you think carefully, ये जो atom है इसने ये photon absorb कर लिया. So after absorption we can say that total momentum of the system will remain conserved. तो कैन वी से दैट जो फोटोन का मोमेंटम था वही हाइड्रोजन का मोमेंटम हो जाएगा, राइट? बिकॉज फोटोन बिकम्स द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन. सो वी कैन से दैट डेल्टा पी ए इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, ओके, विच इज नथिंग बट एच अपॉन लैम्डा ए, है ना? एच अपॉन लैम्डा होता है मोमेंटम, ठीक है, फोटोन का. तो एच, दिस विल बी एच अपॉन लैम्डा ए, राइट? एंड इफ यू सी यहाँ पे जब एमिशन हो रहा है, जब फोटोन एमिट कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, इट मस्ट बी मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है, लेट उसे मूव करने दो, बट इट विल एमिट अ फोटोन. तो जितना मोमेंटम मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो जितना फोटोन लेके गया मोमेंटम, ठीक उतना ही मोमेंटम हाइड्रोजन का भी चेंज हुआ होगा, बिकॉज टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट? बिकॉज मोमेंटम का जितना मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फोटोन लेके गया उतना ही इम्पल्स हाइड्रोजन को मिला होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो चेंज तो सेम हो जाएगा ना, बिकॉज नेट चेंज वेक्टोरली इट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना? तो मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी सेम. आई होप यू आर गेटिंग दैट. तो वी कैन से दैट जो डेल्टा पी एमिशन होगा दिस विल मैग्नीट्यूड वाइज दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द एमिटेड फोटोन विच इज नथिंग बट एच अपॉन लैम्डा ई, है ना? एच अपॉन लैम्डा ई. नाउ वी कैन से दैट हमें लैम्डा पी अपॉन ई निकालना है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी. हाँ, सो वी कैन से दैट डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए, है ना? लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए विच इन द क्वेश्चन इज गिवन एज 5. ये 5 गिवन है, तो अगर ये 5 गिवन है तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ए 5 गिवन है ना, लैम्डा ई बाय लैम्डा ए. हाँ, यस. सो this comes out to be 5:1, but given option is 1:2. Okay, so this is wrong. So I hope guys you would have enjoyed this solution. That's all. Thank you.